Hi, you guys. Welcome back to my channel. I hope you guys are doing amazing. So, festivals are around the corner. Navratri has already begun, and Diwali, New Year's, up to festivals hai. And I just feel like this year has passed so quickly. Like, abhi to 2025 start hua tha, and we're already heading towards the end of this year. But anyway, festivals are here, and हम सबको चाहिए कि हमारे बाल, हमारी स्किन अच्छी लगे. We all want frizz-free hair, right? So do I. And बहुत टाइम से मैंने एक नया शैम्पू ट्राई नहीं किया था. So finally, I've tried this shampoo that I was eyeing on since a very long time. This is the L'Oreal Liz Unlimited shampoo. I've ordered the hair mask as well. It's been, I think, 15 to 20 days that I'm trying both of these items out. And hair mask हम दूसरे वीडियो में रिव्यू करेंगे. आज के लिए हम खाली शैम्पू करते हैं. Let's see if it's worth the money or not. So without any further ado, let's quickly get into the video. Alright, so let's talk about the claims of this L'Oreal Liz Unlimited shampoo. So this one has pro-keratin in it, and it claims to strengthen the hair structure. It provides intense smoothing and frizz-free hair. It also gives up to 96 hours of frizz control, and it also increases shine and softness. ये है सारे claims इस shampoo के. It retails for ₹790 for 300 ml. So it's not a drugstore shampoo. थोड़ा सा ये premium shampoo है, and it smells great. It smells so nice. Like the minute you enter a salon and वहाँ पे जो ऐसे premium shampoos की जो smell आती है, इसमें वैसा ही smell है. So yeah, I've been using it since the past, as I said, 20-25 days. And let's talk about my review of using this shampoo. Alright, so firstly we'll be talking about the first impression of this shampoo and the packaging. Talking about the packaging looks absolutely premium. I love this color. It just looks so cool. And the packaging is quite sturdy. बिल्कुल भी लीक नहीं होता है. बहुत ही ऐसे sleek packaging है. So travel friendly है. No complaints with the packaging at all. Talking about the first impression, so सबसे पहले मैंने notice किया that this shampoo does not lather a lot. I do not like shampoos that don't lather. मेरी आदत है मैं हमेशा एक मग में थोड़ा सा शैम्पू लेती हूँ, पानी लेती हूँ, I mix it. I love shampoos that lather well, are foamy, because वो squeaky clean feeling देता है. ये बहुत ज़्यादा lather नहीं होता है. No matter how much water you mix, it just doesn't lather so much. So इसमें एक problem definitely है. If you apply a lot of oil on your hair and फिर अगर आप शैम्पू करोगे तो I think 2 या 3 rinses लगेंगे वो पूरा oil को हटाने में. So I do not recommend using this shampoo just after you've oiled your hair. So yeah, this one doesn't lather. And एक और फर्स्ट इंप्रेशन मैंने नोटिस किया था कि जब आप शैम्पू करोगे उसके बाद व्हेन यू ड्राई योर हेयर तो आपको ऐसा लगेगा कि यार वो शैम्पू का रेसिड्यू रह गया है बालों में. इट इज़ अ हैवी शैम्पू. ऐसा नहीं है कि रेसिड्यू रहता है, अच्छे से ये क्लीन हो जाता है, बट बाल थोड़े से आई डोंट नो हाउ टू से इट, बट बाल थोड़े से हैवी फील होंगे. आई ऑल्सो हैव लो पोरोसिटी हेयर, तो वो भी रीज़न हो सकता है. बट दिस इज़ अ हैवी शैम्पू एंड आपके बाल थोड़ा टाइम लेगा नेचुरली ड्राई होने में, एंड आपको लगेगा यार थोड़ा स्टिकी फील हो रहा है, बट आफ्टर 2 to 3 hours वो नॉर्मल हो जाता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट माई impression of using this shampoo and whether I liked it or not. Alright, so my number one reason of ordering this shampoo was the fact that I have really frizzy hair. मतलब मेरे इतने ज़्यादा frizzy बाल है, आप यहाँ देख सकते हो. मेरे chemically treated hair नहीं है, मैंने color भी नहीं कराया है. जो लोगों का chemically treated hair है या color कराया है, उन लोगों के लिए बहुत amazing shampoo है ये. But my reason was the fact that I have really frizzy hair and I wanted a shampoo that could control the frizz. It definitely controls the frizz, and I think that's the reason that this shampoo is a little heavy and sticky, because आपके बाल ऐसे कभी कभी आप शैम्पूज यूज करते हो और एकदम खुल जाते हैं. इसके साथ ऑपोजिट होता है, आपके बाल थोड़े से ऐसे रिस्ट्रिक्टेड, थोड़े ज़्यादा स्ट्रेट लगेंगे, बिकॉज आई थिंक इट्स अ फ्रिज कंट्रोल शैम्पू. इसलिए इट्स ग्रेट इफ़ यू हैव ड्राई हेयर. अगर आपके नेचुरली वो ऑयल सिक्रीट नहीं होता है, नेचुरली अगर आपके बाल ग्रीसी नहीं होते हैं, इट्स एन अमेजिंग शैम्पू फॉर यू. इफ़ यू आर फ्रिजी है, यू मस्ट बाय इट. आई नेचुरली हैव रियली ग्रीसी हेयर, सो फर्स्ट या सेकेंड डे पे मेरे बाल बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत फ्रिज फी लगते हैं, बहुत स्मूथ लगते हैं. बट अभी आप देख सकते हो दिस इज द थर्ड डे एंड माई हेयर इज लुकिंग really nice and frizz free, but यहाँ से बहुत heavy and oily भी लग रहे हैं, because naturally I have oily hair. तो अगर आपके naturally oily hair है, you must skip this shampoo, because आपके बाल और ज़्यादा oily होने लगेंगे और ज़्यादा greasy लगेंगे. If you have dry hair, you can definitely use this shampoo. It is amazing. It does have sulfates in it, so that is one thing that you have to just take care of. I mean, if you don't have a problem, you can definitely use it.
Alright, so my final review of this shampoo would be that if you have frizzy hair, but if you have dry hair, this shampoo is for you. But if you have greasy hair like me, you have to be careful. ये बालों को और greasy and और heavy बना देगा. So for me, it is a skip. This is the only bottle I would buy, and खत्म होने के बाद I would not buy another bottle of it. But price wise, I think it's a great buy. As I said, if you have frizzy dry hair, you must try it out. Talking about the hair mask, that's in for another review, but I love the hair mask. I have so much to say about it, so stay tuned for that. And I hope you like this video. If you have liked it, do not forget to hit the like button, and for more such videos, please subscribe to my channel. I shall see you guys very soon. Till then, take care of yourselves. Bye bye.